Hey guys, what's up? What's up? I can see a lot of people joining in here, a lot of excitement. So, Shant, I hope I'm audible. If you can sort of comment that in the comment section, it'll be great for me. Guys, can you hear me? Some comments in the chat section will help. Okay, great, great. I think Megha is also joining in here. Some comments in the chat section. Hello, Megha. How are you? What's Hi, up? What's up? I'm good. How are you? I am good. I'm good too. We are meeting after a year, having the Yeah. same topic to discuss. A lot of things coming in into the picture, I think. Yes. Are we live? Yes, yes, we are absolutely live and see the excitement. We have too many people here. Awesome. Ganya is saying, be your future safe. Mujhe thank you. Shekhar, hi. What's up? Vicky Patel, hello. Hi, Tushar. Hi, Mahesh. Thank you so much, guys. Okay. So, first of all, guys, I want to say a very warm welcome to all of you in the crypto taxation webinar today. We'll be answering a lot of user queries and questions with us. And to answer that, we have Megha Jain with us. Megha, you can come live again. Yes, I'm live. Yes. So I would take a moment to introduce Megha. She has an expertise in personal taxation for almost over a decade. She has been into the industry and the right perfect bet for us to answer all your questions and queries. So, Megha, few things that I wanted to sort of highlight in the beginning of the webinar. I think crypto ecosystem when it comes to taxation is quite very confusing, and people have a lot of questions. We have sort of curated many queries when it comes to spot futures, NFTs, कैसे क्रिप्टो टैक्सेशन काम करता है. तो आज ये सारे क्वेश्चन आपके वे में आने वाले हैं कुछ समय में. Sure. I have come prepared, all ready to take on all crypto questions. Okay, so now it's all over you and I'll be beginning with my first question. बहुत ही एक सिंपल सवाल से इसको स्टार्ट करते हैं कि हाउ इज क्रिप्टो टैक्स्ड इन इंडिया, यानी क्रिप्टो एज एन एसेट क्लास कैसे टैक्स किया जाता है. अच्छा, सो अपूर्वा, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट क्रिप्टो करेंसी जो है इंडियन टैक्स लॉज में वी कॉल इट वर्चुअल डिजिटल एसेट्स और वीडीए. वीडीए इज द मोर पॉपुलर टर्मिनोलॉजी और द लार्जर टर्मिनोलॉजी यूज्ड. वीडीए के अंदर आपके क्रिप्टोज भी आते हैं, एनएफटी भी आते हैं एंड सिमिलर सच प्रोडक्ट्स. अब इंडिया में क्या होता है, क्रिप्टो में एक फ्लैट 30% टैक्स है. तो वॉट एवर गेन्स यू मेक उस पर फ्लैट 30% टैक्स लगता है और उसके अलावा सरचार्ज और सेस. एंड क्रिप्टो में एक और चीज ध्यान जो रखनी होती है, दिस फ्लैट 30% टैक्स इज इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी होल्डिंग पीरियड. इधर होल्डिंग पीरियड पे डिपेंडेंसी नहीं है. वेदर यू ट्रीट योर क्रिप्टो एज कैपिटल गेन्स और बिजनेस, इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट फ्लैट रेट लगता है. उसके अलावा कपल ऑफ थिंग्स टू कीप इन माइंड इज क्रिप्टो पे टीडीएस भी लगता है. जुलाई 2022 से एवरी टाइम जब आप क्रिप्टो सेल करते हो या वीडीए सेल करते हो, उस पर 1% टीडीएस लगता है. अब जो बायर्स होते हैं या एक्सचेंज जैसे कि मुद्रेक्स, दीज आर द पीपल हु गो अहेड एंड डिडक्ट द टीडीएस एट द टाइम ऑफ द ट्रांजैक्शन. नेक्स्ट, क्रिप्टो के साथ जो लॉसेस भी होते हैं, अगर मान लीजिए आपको कोई लॉसेस हुए हैं, दोज लॉसेस आर नॉट अलाउड टू बी सेट ऑफ. यानी जो अगर आपके लॉसेस हो गए, दे आर इनकर्ड लॉसेस, दे आर अ सम कॉस्ट. उसका आप कुछ भी नहीं कर सकते, ना कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, ना गेन्स के साथ एडजस्ट कर सकते हो. एंड लास्टली एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, जब आप क्रिप्टो का गेन कंप्यूट कर रहे हो, आपको कोई डिडक्शन नहीं मिलता बिसाइड्स द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन. जैसे अगर मान लीजिए आपके कोई और एक्सपेंसेस है, जैसे ब्रोकरेज कॉस्ट है, माइनिंग कॉस्ट एक्सेट्रा है, वो सब में आपको डिडक्शन बिल्कुल नहीं मिलेगी. The only deduction that you will get is towards the cost. ओके ओके, थैंक यू मेघा. सो मेघा, हमारे कहने का मतलब है कि शॉर्ट टर्म गेन्स एंड लॉन्ग टर्म गेन्स में यहाँ पर कोई डिफरेंशिएशन नहीं आता है जब हम क्रिप्टो टैक्स की बात करते हैं, जितना मुझे समझ आ रहा है. Absolutely, yes. ओके ओके. Mystery Mrs. speaking, ma'am, please speak in English. Can't understand. Okay, okay. Point to be noted. Moving on, एक बहुत ही जो हमारे पास इम्पोर्टेंट सवाल है, क्योंकि अब क्रिप्टो टैक्स फाइलिंग का एक क्वेश्चन आता है कि विच आइडिया फॉर्म डू आई नीड टू फाइल इफ आई हैव both a salary and crypto tax gains from Mudrex. All right. So if you have both salary and crypto, अगर आपके पास दोनों salary and crypto है, then you will have to file an ITR 2. आपको ITR 2 भरना पड़ेगा.
तो ITR 2 के तहत हम इस चीज को फाइल कर सकते हैं बेसिकली. हाँ. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमने मेगा बहुत प्रोमिनेंटली देखा है, हमारे यूजर्स ने पूछा है, हाउ डू आई क्लेम द TDS डिडक्टेड बाय मुद्रिक्स बाय फाइलिंग माय ITR? ऑल राइट, सो दिस इज वेरी वेरी क्रूशियल एंड आई अंडरस्टैंड बहुत लोगों को ये क्वेश्चन होगा. नाउ जो आपका टीडीएस करता है, नाउ दिस इज समथिंग जेनरिक. अगर किसी ने आपका टीडीएस डिडक्ट किया है, इफ एनीबडी हैज डिडक्टेड योर टीडीएस, वेदर इट इज मुद्रेक्स और एनी अदर क्रिप्टो प्लेटफॉर्म और एनी अदर इंडिविजुअल और एन एंटिटी, then the details of all the tax deducted at source will be populated in your 26AS. आपका जो 26AS होता है उसमें आपके सारे टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स के डिटेल्स आते हैं. You can get your 26AS बहुत easily from the IT department portal. Now, once you get that 26AS, फिर using that 26AS and all other income information, you have to file an ITR. You have to fill schedule VDA. This is very very important. अगर आप क्रिप्टो में ट्रांजैक्ट कर रहे हो तो आपको स्केड्यूल वीडीए फिल करना मैंडेटरी हो जाता है. अब आप स्केड्यूल वीडीए अच्छे से फिल कर दो, उसके बाद स्केड्यूल टीडीएस होता है आईटीआर में. फिल इन द स्केड्यूल टीडीएस करेक्टली, ऑलराइट, विद ऑल द डिटेल्स अपीयरिंग इन द 26AS. उसके बाद जो होता है ना, सिस्टम आपका ऑटो कैलकुलेट कर लेता है. सिस्टम आपका पहले, द सिस्टम विल फर्स्ट कंप्यूट योर टोटल टैक्स लायबिलिटी, देन फ्रॉम द टोटल टैक्स लायबिलिटी whatever is the TDS, वो सारी आपकी TDS डिडक्ट हो जाती है. तो that is how you go ahead and claim a credit of the TDS. Okay, okay. Megha rightfully answered. One question which I'm pertinently seeing, I think I would want to highlight that in the comment section. Do we have to pay taxes for loss also? जिसका हमने अभी discussion किया. They say 30% flat tax, but platform like Mudrix deduct some 1% tax also. Can you clarify? Sure. All right. So here two things. Loss पे आपको कभी टैक्स नहीं भरना पड़ता है because the term itself is income tax. So only if you have an income, you will go ahead and pay taxes on the same. Now with regard to crypto losses का आपको कोई benefit नहीं मिलता. You cannot claim a deduction of the loss against any income, और आप उस loss को carry forward नहीं कर सकते. You cannot carry forward the loss. As regards the TDS जो deduct हुआ है, irrespective of your gain or loss position by the crypto platform, as I mentioned in the earlier step, this TDS can be claimed by you at the time of filing the return of income. तो जब भी आप अपनी return of income file कर रहे हो, by the way, current for this year, the due date of ITR filing has been extended to 15 September. So if you go ahead and file your ITR by 15 September, तो आपकी जो पिछली फाइनेंशियल ईयर है उसके सारे टीडीएस क्रेडिट आपको इस आईटीआर में मिल जाएंगे. Absolutely, absolutely. Actually, that's a kind of relief, Megha. Even I have extended my deadline. I was thinking, and then I came to know it's 15th September. So I think it's a relief for all of us, especially people who have invested in crypto, who have sort of then done their bank withdrawal. It's kind of easy. एक सवाल है जो मुद्रेक्स के जो यूजर्स है मेगा, उन्होंने पर्टिनेंटली हमसे पूछा है कि हमारा जो प्रोडक्ट है, जैसे मुद्रेक्स का एक यूनिक प्रोडक्ट है कॉइन सेट. If I have invested in Mudrex coin set, let's just say crypto blue chip, how can I calculate the taxes for this one? All right. This is a very interesting question and also slightly complicated. So इसमें first I will tell you the first point of the question, then address whatever is slightly the complication. So first let me explain to the user what are these coin sets. In a nutshell, very simply put, ये जो coin sets आपके ये एक crypto basket के जैसे है, और in simple terms these can be compared with ETF or mutual funds, but they are essentially not ETFs and mutual funds. For the sake of understanding, you can compare. Ab, when we talk about the taxation, irrespective of how you go ahead and feature your crypto or how you transact, the tax rate for crypto is always flat 30%. तो इधर भी आपका फ्लैट 30% टैक्स लगेगा. However, coin sets में क्या होता है? There is a concept. This is where the complication comes. There is a concept of rebalancing. तो हमेशा क्या होता है, आपका जो क्रिप्टो का बास्केट होता है वो रीबैलेंस होता जाता है, सो दैट यूजर्स आर एबल टू गेट द मैक्सिमम आउट ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट्स एंड दे ऑलवेज स्टे इन्वेस्टेड इन द बेस्ट क्रिप्टोज अवेलेबल. तो जब कभी भी ये आपका रीबैलेंसिंग होता है, for tax terms it is considered as a sale transaction,
एंड हमेशा जब ये रीबैलेंसिंग होता है, इस पे आपकी टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट होती है, एंड इफ यू हैव मेड अ गेन, यू विल हैव टू गो अहेड एंड पे टैक्सेस ऑन दिस गेन. This is where the complication arises. So what we also advise the users always is, whenever you have invested in coin baskets, make sure that you maintain robust documentation. आपकी documentation अच्छे से होनी चाहिए. You need to have transaction record of all the transactions that you're entering into. And in case the user has any doubts or if they feel stuck somewhere, then the Mudrex users especially can go ahead and reach out to the support team at Mudrex so that they receive appropriate support with respect to these coin sets. Absolutely, absolutely. Megha, I think very wonderfully answered. So I wanted to sort of clarify further more on this. मेगा, मान लीजिए मेरे पास एक बास्केट है, उसमें क्रिप्टो ब्लू चिप का हम बात करते हैं, 5 कॉइन्स है, उसमें 4 कॉइन्स है. तो अगर मैंने कुछ गेन्स लिए, मैंने 1000 इन्वेस्ट किया था, आज मेरा उस पर गेन करके टोटल बन चुका है, उस पर जो मेरा रिटर्न है 2000. तो जब हम 2000 की बात करेंगे, जो मेरा टोटल रिटर्न बना है, उस पे मैं टैक्स दूंगी कि इंडिविजुअल कॉइन्स में देखा जाता है वो, क्योंकि उस बास्केट में तो 5 कॉइन्स है, तो वो कैसे यूजर्स समझें? इसको इंडिविजुअली आपको देना पड़ेगा, इसीलिए मैंने रीबैलेंसिंग का बोला. यू विल हैव टू गो अहेड एंड सी एट एन इंडिविजुअल लेवल, एंड फॉर दोज इंडिविजुअल क्रिप्टोज दैट फॉर्म पार्ट ऑफ द बास्केट, उसमें आपको टैक्स लगेगा. Okay, okay, absolutely. I hope it will be like really clear for our users. Next question, again coming to the, I would say, prime questions from our customers. They've asked, if I gift crypto from my Mudrex account, who pays the tax, the giver or the receiver, and under what conditions? All right. So typically, what the Indian tax law says, it's always the receiver of the gift who pays taxes. अगर आपको gift मिल रही है, technically वो आपकी income हो जाती है. So gift is regarded as an income, and you pay taxes on that. However, there are certain nuances to this. One, gift up to rupees 50,000 is not taxable if it is from a non-relative. However, the Income Tax Act gives out specified relatives. There are specified categories of relatives जहाँ पे even if you're getting gifts more than rupees 50,000, आपको tax नहीं pay करना पड़ता. For example, if you're getting gifts from a parent or a child is giving a gift to the parent, vice versa, or spousal transfers. In that case, even if the value exceeds, you do not have to pay taxes. But if it is apart from a relative, you're getting a gift, if you're getting a gift, let's say from a friend or a cousin, in that case it becomes taxable if the value of gift is more than rupees 50,000. And ये जो आपको gift मिलता है, it has to be declared Okay, okay. under income from other sources. Mega, I think I'm sort of seeming a little bit of internet connection problem from your side, Mega. Am I audible now? Yes, Apurva, you're audible. Okay, okay, cool, cool. Yeah, Mega, please carry on. All right. Do I repeat this Okay. gift taxation? No, 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 Megha. I think it's fine. So I have a question. अभी बहुत ही, I think बहुत सारे लोगों के मन में ये होगा, राखी आ रही है, अब मेरा भाई मुझे गिफ्ट कर देता है 50,000 के ऊपर का क्रिप्टो, तो वो लाइबल होगा कि नहीं होगा गेम्स के लिए, ऐसे All कुछ right. बात करते हैं. Sure. जी. So, agar, again, here is where, the Income Tax Act is very strict. If it is specified relatives, if it is your own Yeah. brother, then you're safe. Yes. But if it is a cousin, then yes, you will have to go ahead and pay the taxes. Okay. Clear, clear. I have my target. Moving on to something next that I have in my mind, जो बहुत ही pertinent question है मेघा, मैंने देखा है कि लोग ये डिस्कस करते हैं कि अगर स्पॉट ट्रेडिंग पे टैक्सेस लगते हैं, वो कैसे डिफरेंट हो सकते हैं जो फ्यूचर ट्रेडिंग पे टैक्स लगते हैं क्रिप्टो में. उसमें मैं चाहती हूँ आप बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करिए, बहुत कंफ्यूजन है हमारे पास. All right, I think it's time to address the elephant in the room Yes, finally. absolutely. All right, so first of all, to users, let me tell you, this is a very caveated answer I'm giving. Again, my apologies, but this has to be a caveated answers because currently the crypto law or the VDA law in India is still evolving. We are still awaiting a lot of clarifications, a lot of guidelines from the IT department. But let me tell you the current position and also currently the dilemma crypto users and also tax advisors like us are facing. All right. So first, let me start off by telling the current position that is sort of being adopted.
And उसके बाद I will also tell you what are the key hygiene points one needs to keep in mind. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो आपकी क्रिप्टो ट्रेडिंग है, स्पॉट ट्रेडिंग में फंडा बहुत सिंपल है. वेदर यू आर सेलिंग, स्वॉपिंग और डूइंग एनी अदर ट्रांजैक्शन, वीडीए इज चार्ज एट अ फ्लैट रेट ऑफ 30%. 30% गेन में आपको टैक्सेस पे करने हैं प्लस एप्लीकेबल सरचार्ज एंड सेस, एंड ओनली द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इज डिडक्टेबल. आई होप आई एम क्लियर. अब जब हम लोग फ्यूचर ट्रेड पे जाते हैं, विच इज ऑल्सो पॉपुलरली नोन एज अ डेरिवेटिव ट्रांजैक्शन, दिस इज वेयर आपका जो डिस्टिंक्शन है बिटवीन स्पॉट एंड फ्यूचर बिकम्स वेरी वेरी क्रिटिकल फ्रॉम अ टैक्स इनपुट. Currently many Indian crypto exchanges and also tax experts, उनका ये ओपिनियन है कि क्रिप्टो फ्यूचर्स जो है उसको आपको रेगुलर बिजनेस जैसे ट्रीट करना है. उसकी क्लासिफिकेशन या उसकी कैटेगराइजेशन जो है वीडीए जैसे नहीं होनी चाहिए. ऑल राइट. द रीजन, द सिंपल रीजन इज, इसमें these tax experts and these exchanges are treating futures crypto trade as a financial contract जिसकी वैल्यू डिराइव होती है वीडीए से. एज अ रिजल्ट ऑफ दिस जो इसका प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट फ्रॉम क्रिप्टो फ्यूचर्स, इट इज जनरली ट्रीटेड एज प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस, और अकॉर्डिंगली Oh, ये आपके स्लैब रेट पे टैक्स होता है. So, or unlike spot trading, here is where you can also go ahead and take a deduction of all legitimate business expenses. तो अगर आपकी कोई business expense है, for example, brokerage fee, subscription fee या mining fee, etc., or whatever could be the expense, all those legitimate business expenses can be claimed as a deduction. बट लेट मी पुट आउट अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केवियट. अभी फिलहाल तो इंडस्ट्री और सर्टन टैक्स एक्सपर्ट्स हैव अडॉप्टेड दिस पोजीशन कि क्रिप्टो yes. फ्यूचर्स पे आप पीजीपीपी, दैट इज एज बिजनेस यू ऑफर इट एंड अकॉर्डिंगली टैक्स इट एज स्लैब रेट. But we don't have any explicit clarification or law in place by the IT department wherein this demarcation between spot and futures trade is getting the blessing of the law. यानी लॉ ने अभी तक सर्टिफाई नहीं किया है, ये पोजीशन हमने अडॉप्ट की है इन द बैकड्रॉप ऑफ lack of regulation available here. And tax law, as we all know, is subject to constant evolution and change. And again, earlier this year, budget में जो हमारी ऑनरेबल एफएम है, उन्होंने कहा था कि इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम वीडीए गाइडलाइंस आएंगी, वीडीए में और क्लैरिफिकेशंस आएंगे. सो देर आर चांसेस दैट दिस टॉपिक मे बी पिक्ड अप एंड वी मे गेट डेफिनेटिव गाइडलाइंस इन ड्यू कोर्स. And as a result, we highly advise all users to seek out to a qualified tax professional for a personalized tax advice. Absolutely, Megha, noted. I'm going to abide by all your recommendations after I've heard whatever you have told. And I think, yes, because we don't have proper regulations, there is a lot of confusion. And I have been talking to many people, who have sort of doing trading in futures. They they believe, or I would say, they know that profits are same tax as we pay, like 30% tax future trading पे भी लगता है. उनका बिलीफ यही है, वो मानते भी यही है. आई होप कुछ क्लैरिटी आई होगी इस सेशन से, गाइस. मूविंग ऑन, एक और क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं. एक यूजर का क्वेश्चन है, इफ आई डू P2P बाइंग एंड सेलिंग ऑफ USDT, हाउ विल बी माय टैक्स कैलकुलेटेड? अच्छा, अब जो आप पीयर पी टू पी कर रहे हो, पीयर टू पीयर, अब इसमें जब आप बाइंग या सेलिंग करते हो ऑफ यूएसडीटी इन इंडिया, इट इज सब्जेक्ट टू द सेम रेगुलेशंस. इसमें कोई भी चेंज नहीं है. द रेगुलेशंस विच आर एप्लीकेबल टू अ रेगुलर वीडीए ट्रांजैक्शन, द सेम विल अप्लाई. सिंपल 30% टैक्स आपको पे करना पड़ेगा. एंड उसके अलावा देर विल ऑल्सो बी 1% टीडीएस, विच इज समथिंग वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. बट अब इधर P2P ट्रांजैक्शन में क्या होता है, यूजली द बायर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिडक्टिंग टीडीएस एट द रेट ऑफ 1%. जो भी आप कंसिडरेशन या जो भी आप सेल वैल्यू सेलर को दे रहे हो, उस पर बायर को करना पड़ता है. ऑल राइट. So if you are a seller, you need to ensure that the buyer is accurately deducting TDS. On the other hand, if you are, the buyer, you need to ensure that you have deducted TDS. एंड ये जो आप टीडीएस डिडक्ट करते हो, उसको आप फॉर्म 26Q या 26QE में आपके आईटीआर पे रिपोर्ट करना पड़ता है. सो दिस इज वेयर P2P transactions gets slightly trickier from a tax angle because of this TDS requirement. Absolutely, absolutely. Ban Boster is saying something. He's actually recommending people P2P transaction mat kariye.
मेरे दोस्त का बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया था. Okay, he's Well, also. because of because of the tax nitty-gritties and especially the TDS requirements around this, तो इस पे individuals का burden ज़्यादा compliance burden increase हो जाता है. ओके ओके. मेघा, हम बार बार बात कर रहे हैं फॉर्म 26Q की, राइट, जिससे हम लोग टीडीएस हम लोग एक्चुअली फाइल कर सकते हैं. वो कहाँ पर, जैसे यूजर्स का ये क्वेश्चन होता है कि ये फॉर्म हमें कहाँ मिल सकता है. अच्छा, सो आपका जो फॉर्म, ये जितने भी सारे टीडीएस फॉर्म्स है, इट इज वेरी इजीली अवेलेबल ऑन द इनकम टैक्स पोर्टल. यू लॉग इन टू द इनकम टैक्स पोर्टल, देन देयर itself you will go ahead and file forms. You will find a dedicated section for all categories of TDS forms. And another caution or another heads up to all the people who are required to deduct tax. In certain cases you may be required to obtain a TAN. ऑल राइट, सो इफ दैट इज द रिक्वायरमेंट, तो पहले आपको टैन ऑब्टेन करना पड़ेगा, फिर ही आप टीडीएस कर पाओगे. दिस इज नॉट अ ब्लैंकेट रिक्वायरमेंट अक्रॉस केसेस, देर आर सर्टन केसेस. So for more details around this, again, as I've said earlier, please reach out to a tax expert or a tax professional for a personalized advice. Absolutely, absolutely. Megha, moving on to the next question, which is very pertinent again. यहाँ पर ये कि what are the tax implications if I transfer crypto between Mudrex and the other exchanges? Are those transfers taxable events? All right. Apurva, could you please repeat your question? I think I lost you midway. Okay, okay. Megha, am I audible now? Yes. Yes, yes. So the question is ki if I transfer crypto between Mudrex and the other exchanges, are those transfers taxable events? All right. Self transfers are not taxable. Okay. They are not transferable. Yes. Cool, cool. Okay. Another question that we have is if I received a sign up reward on Mudrex, एक user पूछ रहे हैं, does that come under my tax obligation as well? एब्सोल्युटली यस. आपको कोई भी साइन अप रिवॉर्ड मिलता है कहीं पे भी, ऑल राइट, वेदर यू गेट इट इन कैश और यू गेट इट बाय वे ऑफ अ क्रिप्टो, वो फुल्ली टैक्सेबल होता है. बट हियर द टैक्सेबिलिटी चेंजेस डिपेंडिंग अपॉन हाउ यू आर रिसीविंग इट. सो इट विल बी टैक्सेबल एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज जब भी आपको कोई साइन अप अवार्ड मिलता है. whether you're getting it directly in the form of cash, crypto, income from other sources में आपको टैक्स करना पड़ता है. इसकी टैक्स लाइबिलिटी आपकी हो जाती है एट स्लैब रेट्स. अब नेक्स्ट क्वेश्चन नेचुरली यूजर्स का ये होता है कि इसकी वैल्यू हम लोग कैसे डिराइव करें और हाउ डू आई असाइन एनी वैल्यू. तो टिपिकली देर इज अ टर्म फेयर मार्केट वैल्यू. जो ये फेयर मार्केट वैल्यू होगा आपके क्रिप्टो का व्हेन यू रिसीव इट एज पार्ट ऑफ योर साइन अप बोनस, ऑन द डेट ऑफ रिसीट जो आपकी फेयर मार्केट वैल्यू होगी, दैट विल बिकम योर क्रिप्टो वैल्यू ऑल्सो फॉर टैक्स पर्पसेस. Absolutely, absolutely, Megha. Also, next very, I would say, important question, जो airdrops के बारे में हमने बहुत बार सुना है. तो ये question आता है कि if I receive airdrops or carry out a staking on a foreign DApp, does the foreign source of income change the tax treatment in India? ऑलराइट, सो जब भी आप एयर ड्रॉप रिसीव करते हो और इफ यू आर डूइंग एनी स्टेकिंग ऑन अ फॉरेन डी ऐप, इट डज नॉट चेंज योर टैक्स ट्रीटमेंट अंडर इंडियन टैक्स लॉ. इंडियन टैक्स लॉ में आपकी टैक्स ट्रीटमेंट सेम रहेगी. द सेम वीडीए रूल्स विल कंटिन्यू टू अप्लाई. However, a word of caution here, if you're doing these airdrops, then there may be a probability that you will be required to undertake additional reporting compliances. क्योंकि this can take the color of a foreign asset. And if you're an Indian tax resident, अगर आप Indian tax resident हो और आपके पास कोई भी foreign asset है, तो उसको आपको मैंडेटरीली आईटीआर में स्केड्यूल FA, दैट इज स्केड्यूल फॉरेन असेट्स में रिपोर्ट करना पड़ता है. Okay, okay. Cool. So it is Schedule FA. New finding Yes. for me also, Megha. Thank you for highlighting this one. Sure. Moving on to another question. I think this is a little complicated, but we would want to sort of touch upon it. Sure. It says if I participate in liquidity pools or yield farming via projects or partner DeFi platforms, how are those earnings classified and taxed? ऑलराइट, तो अब इसमें क्या होता है, लिक्विडिटी पूल्स या आप यील्ड फार्मिंग में व्हेनेवर यू आर इन्वॉल्व, इस पे आपके मल्टीपल
टैक्सेबल इवेंट्स होते हैं इंडिया में. यानी एट मल्टी स्टेजेस, देर आर सेवरल स्टेजेस जहां पे आपकी अर्निंग क्लासिफिकेशन होती है एंड यू एंड अप गेटिंग टैक्स्ड. बट द ओवरराइडिंग प्रिंसिपल ऑलवेज रिमेन्स द सेम, दैट अगर आप क्रिप्टो इनकम है तो वो टैक्स होगी. सो यू विल नॉट एस्केप टैक्सेस, बट द लेवल ऑफ टैक्सेस हियर चेंजेस. So if you're getting initial rewards, those initial rewards will be usually taxable as income from other sources. And second stage पे जब आपका gain आ रहा है, when you're transferring these underlying assets, again standard VDA rules, 30% tax आपको pay करना पड़ेगा. अब इससे क्या होता है, ये जो टैक्सेशन ऑफ डिफाई प्लेटफॉर्म्स है, बिकॉज ऑफ दिस मल्टी लेवल टैक्सेशन इवेंट्स, ये काफी कॉम्प्लेक्स हो जाता है. एंड क्योंकि देर आर लैक ऑफ स्पेसिफिक एंड एक्सप्लिसिट गाइडलाइंस, again what we recommend user is always consult a qualified professional. All right, for example a platform like ClearTax for personalized tax advices, so that again you are on the compliant side of law and you're doing things which are in line with the requirements of the Indian tax laws. Absolutely, absolutely, Megha. Megha, moving on to the next question. Are there reporting requirements for crypto received as part of a will or trust? All right. When you receive any asset, crypto Mm-hmm. or not, as part of will or an inheritance, जब आपको Yes. पहली बार ये मिलता है, it is fully exempt from tax. Let us say you have received crypto through your grandfather's will. Okay. In this case, when you receive it, at that point in time ये exempt रहता है, because it is treated as a capital receipt. However, when you decide to sell it at a later point in time, and when it comes to crypto, either sell or swap or transfer, अगर आप ये करते हो, Mhm. then whatever is the tax impact or whatever is the gain you make out of such sale, on that sale and on that gain you will have to pay taxes. Now let me simply help you by way of an example. We are in 2025 now. अब आपको 2025 में through your grandfather's will you got crypto worth rupees 1 lakh. अब 2025 में ये आपका टैक्सेबल इवेंट नहीं होगा, आपको टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा. बट मान लीजिए यू गो अहेड एंड डिसाइड टू सेल दिस 2026 में, तो जब आप 2026 में इसको सेल करोगे, तब मान लीजिए यू आर सेलिंग इट फॉर रुपीज 2 लाख, यू हैव मेड सम गेन. अगर आपने कुछ गेन किया है तो उस गेन पे आपका 30% टैक्स लगेगा. Very important thing that we always advise users who have received crypto through will is keep a copy of the will to prove that आपको ये will में actually मिला है. Keep a copy of the trust deed अगर trust के through मिला है, and most importantly keep track of the expenses. मतलब वो cost, किस cost पे that crypto was procured. आपके फादर या ग्रैंडफादर ने किस कॉस्ट पे उस क्रिप्टो को खरीदा था, या फिर वैल्यूएशन रिपोर्ट या फेयर मार्केट वैल्यू का स्नैपशॉट रखिए, बिकॉज दीज आर वेरी क्रूशियल थिंग्स टू डिटर्मिन द क्वांटम ऑफ गेन यू हैव, एंड अकॉर्डिंगली दिस विल हैव अ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन योर टैक्स लायबिलिटी. Okay, okay. Megha, I'm seeing one question here. So Ganya is asking, मैम अगर मैंने $100 से ट्रेड किया है और मेरा $150 हो जाता है, तो क्या मुझे टैक्स देना पड़ेगा जब मैं विड्रॉ करती हूँ इस अमाउंट को? एब्सोल्युटली. अगर आपने $100 से ट्रेडिंग स्टार्ट की है एंड दिस $100 ऑफ योर क्रिप्टो हैज बिकम 150, यानी आपका $50 गेन होगा. ऑलराइट, तो जो भी आपका गेन है उस गेन पे आपको टैक्स देना पड़ेगा. एंड इफ देयर इज एनी टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, व्हिच आई एम श्योर विल बी द केस, 1%, ये 1% टैक्स जो है आपकी फाइनल टैक्स लायबिलिटी से इन योर आईटीआर विल गेट एडजस्टेड. Okay, okay. So I would say for salaried employees, we have one question, Megha, which is very, consistently asked, which if I receive part or all of my salary in crypto, how is the value determined for tax? All right. So crypto, irrespective of its categorization, will be, considered as crypto. But when it comes to salary, अगर आपको क्रिप्टो मिल रही है as salary, then उसका income categorization slightly change हो जाता है. Now it will be fully taxable as income from salary, just like your regular salary income. अब इसमें क्या ध्यान रखना पड़ता है, जो आपको वैल्यू है क्रिप्टो की दैट यू आर रिसीविंग एज योर सैलरी, इसका जो डिटर्मिनेशन होगा,
it will be dependent upon the fair market value or the FMV of the crypto in INR, that is in Indian rupees. अब मैं इसका थोड़ा सा एक आपको एग्जांपल देके समझाती हूँ, बिकॉज ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है काफी बार. जी. मान लीजिए आपको 0.1 इथीरियम मिला है एज योर सैलरी, एंड ये जिस दिन आपको मिला था, द डे यू गॉट इट, 1 ETH वॉज वैल्यूड एट ₹2 लाख. आपको मिला है 0.1 ETH, एंड 1 ETH का वैल्यू उस दिन पे ₹2 लाख था. तो आपकी जो वैल्यू होगी सैलरी विल बी सिंपल, 0.1 ETH दैट यू हैव रिसीव्ड into value of 1 ETH, which is ₹2 lakh. So in this case, 20,000 rupees will be added as your gross salary in the ITR. Okay. I think, Megha, if you can explain the last part again with an example, it will be great. Sure, no The worries. comment Let me, section, yeah. explain this again. Simplify it. Yeah. Let us say that you have received 0.1 ETH as salary. All right, Okay. let us hypothetically, let's say you have received 0.1 ETH on 1st January 2025. And on Hmm. 1st January 2025, 1 ETH was valued at ₹2 lakh. तो अब क्या Absolutely. होगा, योर सैलरी, हाउ डू यू डिटर्मिन सैलरी, कि मेरा सैलरी वैल्यू कितना लगेगा. आई विल टेक द ETH दैट आई हैव रिसीव्ड, दैट इज 0.1 ETH, उसको मैं मल्टीप्लाई करूंगी फ्रॉम द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ 1 ETH ऑन दैट डे, विच इज ₹2 lakh. तो 0.1 into 2 lakh, 20,000 आता है. नाउ दिस 20,000 rupees will be Hmm. chargeable to tax as my salary. Okay. Great. I think, Megha, it must be clear to Shivani. Thank you, Shivani, for your question. Next, moving on, I would say very important question again. What are the penalties for not disclosing crypto income? All right. Before we begin to answer this question, let me tell you this is very, very important. Don't have an idea that you will not disclose income from crypto, or if you're required to report crypto as part of your asset and liability statement, you will not report, because currently, I'm sure a lot of my friends here, our friends who have joined us here, who regularly trade in crypto, may have received notices or communication from the IT department stating that IT department has seen some VDA transactions in their 26 years, but users have not reported. आपको defective notices मिल रहे हैं. Now this is a very preliminary or basic notice that is being sent out. But Indian tax laws में जो है, there are specific provisions which go ahead and penalize people for underreporting or misreporting income. So let us go ahead and walk through them one by one. पहले तो अगर आपने अंडर रिपोर्ट किया है, so the Hmm. penalty for under reporting is usually 50% of the tax due on unreported income. तो Okay. आपका टैक्स जो है, आपको वो टैक्स तो देना ही पड़ेगा. इन एडिशन टू दैट यू विल हैव टू पे 50% ऑफ द टैक्स ड्यू ऑन द अनरिपोर्टेड इनकम. सो लेट अस से आपकी जो अनरिपोर्टेड क्रिप्टो इनकम है 1 लाख की है. अब 1 लाख पे 30,000, 30% पे 30,000 टैक्सेस लगता है. इन एडिशन टू दिस 30,000 आपको 50% और देना पड़ेगा 30,000 का, दैट इज ₹15,000 एक्स्ट्रा. सो 30 प्लस 15,000 आपको देना है. दिस अमाउंट विल फर्दर गेट इंक्रीज्ड बाय एप्लीकेबल सरचार्ज एंड सेस. तो आप समझ रहे हैं आपकी लाइबिलिटी सिग्निफिकेंटली बढ़ जाती है अंडर रिपोर्टिंग में. अब सेकेंडली, अगर आपने मिस रिपोर्टिंग की है, यानी देर इज अ डेलिबरेट सप्रेशन, इन दैट केस यू विल एंड अप पेइंग 200% ऑफ द टैक्स ड्यू. सो आपका जो भी टैक्स ड्यू है उसका 200% आप दोगे टैक्सेस में. देन in rare cases we have seen, but in case of serious cases jahan pe the quantum is huge, or the gain value is huge, and if the IT department notices a willful tax evasion, all right, especially jahan pe, as I said, value bahut high hai, you may also be subject to imprisonment, which can range from 3 months to 7 years. And this is typically applicable in cases where आपका जो concealment amount है या concealment value है exceeds ₹25 lakhs. Okay. And these, were the penal provisions. Apart from the penal provisions, there are several other consequences. जैसे for example, आपकी जो unpaid tax liability है, उस पे you may end up paying interest under section 234A, B and C.
So all these three sections may be applicable together or they may be individually applicable. That is something we will have to see on a case to case basis. And अगर आपका interest इन तीनों section में आ रहा है, then you will have to pay 1% simple interest per month. So whether then even if you have surpassed one day of the month, that is 1 month or part of the month, आपका interest 1% पे compute हो जाता है on the unpaid tax amount. Okay, I think very strict laws coming for it. I think Absolutely. Jasdeep is saying, I think we all need to move to Dubai. We've heard this from many people, Jasdeep. Also, Megha, so what I have done is, our team has done is, we have collated a lot of questions. ये मुद्देक्स यूजर्स के तो क्वेश्चन हमने एड्रेस कर दिए. अब जितने भी हमारे पास एफएक्यू आ रहे हैं लाइव जो यूजर्स हैं उनके थोड़े क्वेश्चंस हम एड्रेस करते हैं ए वन बाय वन. So guys, Sure. we'll be taking up your questions now. Um, I think there we have clarified this before also, but मेघा एक बार और एड्रेस कर लेते हैं. स्पॉट और फ्यूचर ट्रेडिंग में टैक्स लाइबिलिटीज का थोड़ा सा और क्लैरिफिकेशन जानना चाहते हैं यूजर्स एक बार All फिर right. से. All right, यस. no worries. So spot and again futures. Before again I delve in, मैं users को very clearly I want to first highlight कि currently जो हमारे tax laws है, जो guidance है, that is not very explicit and clear. And given the last couple of years, जैसे हमारे tax laws evolve हो रहे हैं, to give out a plain black and white advice will be very unfair also, because this is a matter of a very gray area. Currently there are two schools of thoughts. Spot trading pe to it is the position is very clear. Whatever is the gain you make, on that gain you pay a flat rate of 30%. You don't get any deduction apart from cost of acquisition, and it does not matter how you want to categorize it, whether you want to categorize the crypto as your business or your capital gains, it will be taxed at 30% flat. So spot is simple, done. Now when we come to crypto futures, presently there are a lot of crypto exchange platforms in India, and there are also a lot of tax experts who are of the view that if it is a crypto futures, it should be treated like any other derivative transaction. So आपकी जो भी regular derivative transaction हम लोग otherwise करते हैं, it should be treated on the same lines, all right, on the same level. And as a result of this, जो आपका crypto futures है, it should be chargeable to tax as any other income from business or profession. So it should be a level playing field between derivatives that you do on the stock market and derivatives that you're doing on a crypto exchange. There should be a level playing field. And the reasoning here is that फ्यूचर्स आर एसेंशियली फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट्स. यहाँ पे आपकी डिलीवरी होती नहीं है. ऑल राइट, तो इसके लिए वी शुड ऑफर इट टू टैक्स एज पीजीपीपी. अब जब हम लोग इसको बिजनेस के जैसे टैक्स करते हैं, इट इज टैक्सेबल एज at slab rates. Slab rate taxation होता है. In addition to that, there is an added benefit. आपके जितने भी legitimate business expenditure है, whether it is brokerage fee, commission fee, etc., इसका आपको deduction मिलता है. So whenever you get a deduction of any expenditure, naturally what happens is आपकी जो tax आपका जो gain है वो कम हो जाता है, and consequently your tax outflow also reduces. All right. So this is the position. At the same time, on crypto futures, there is another school of thought. There are other tax experts who believe that crypto, irrespective of how you classify it, should always be taxed at a flat rate of 30%. Crypto में कोई individual को कोई advantage नहीं मिलेगा. It is a VDA, very clear cut, 30% दे दो. So this is a gray area, and we are currently awaiting a lot of detailed guidance or clarification from the IT department of India, the income tax department. So until we get those guidelines clearly, we advise all users to reach out to professionals, to reach out to qualified tax professionals who can help you by giving you a personalized tax advice. And also keep in mind the quantum at stake. This is also very important. आपको देखना पड़ेगा आपकी gains कितनी है. So depending on all of this, reach out to an expert. You can also reach out to somebody at ClearTax also. We also have a lot of crypto experts with us who can go ahead and help you give a personalized advice depending on your use case. Absolutely. I think Megha, now it is like really clear.
आई होप गाइस आपको समझ में आया होगा कि स्पॉट और फ्यूचर ट्रेडिंग पे क्रिप्टो टैक्सेशन के क्या डिफरेंशिएशन है. सो एक क्वेश्चन आ रहा है हमारे पास, इफ लॉस इज नॉट रिपोर्टेड इज इट ओके? प्रॉफिट्स तो रिपोर्ट करने हैं, लेकिन अगर लॉस है तो भी रिपोर्ट करना है क्या? रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट हमेशा रहती है, आप लॉस करो या प्रॉफिट. स्केड्यूल वीडीए में यू हैव टू एंटर ऑल द डिटेल्स. So schedule VDA will go ahead and ask you what is the date of sale, date of acquisition, price, quantity, etc. So whatever are the details asked, you enter the details. If it is a profit, it will automatically compute taxes. If it is not a profit, it will not compute any taxes. And also why it is important to report is, जो आपका वीवीए ट्रांजैक्शंस होता है, एज वी स्पोक अर्लियर व्हेन वी स्टार्टेड द सेशन, एक टीडीएस रिक्वायरमेंट होता है 1% का. सो दिस टीडीएस रिक्वायरमेंट इज देयर irrespective of your gains or losses. So if you have to claim a credit of this TDS in your ITR, it becomes important for you to go ahead and report the crypto as well. Okay, okay. Megha, next question up from one of our users is, irrespective of coin set, or let's just say any coin, 30% tax is okay. Is this tax only if we have done any redemption in that financial year? तभी ये टैक्स देना पड़ेगा कि हमें ऐसे भी टैक्स देना पड़ेगा अगर हमने जस्ट इन्वेस्ट किया है? No, if you have just invested in crypto, all right, सिर्फ होल्डिंग पे या सिर्फ इन्वेस्टमेंट पे आपका टैक्सेस नहीं आता है. योर टैक्स लाइबिलिटी अराइजेस when there is a redemption, when there is a sale or a transfer or a swap. जब आप ये सब कर रहे हो तभी आपका लाइबिलिटी अराइज होता है. सो टैक्स लाइबिलिटी इज ओनली ऑन रियलाइज्ड गेन, नॉट ऑन अनरियलाइज्ड गेन्स. Okay. Megha, am I audible? My screen is यस, clear to you? एब्सोल्युटली. I'm just हाँ, sort of. पूर्व. हाँ हाँ ठीक. सो क्वेश्चन मूविंग ऑन, आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हम लोग ने काफी सिनेरियोज में देखा है कि ये जो क्रिप्टो फ्रॉड्स हो रहे हैं, इससे काफी यूजर्स के मन में बहुत क्वेरीज आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं. वन यूजर इज आस्किंग, देयर इज अ लॉट ऑफ क्रिप्टो फ्रॉड हैपनिंग राइट नाउ. What if someone steals your crypto coins from your soft wallet or from the exchange? How do you treat that in your IT return? ITR return. Yes. All right. Okay. So this question is slightly layered. So I will, answer it in layers by giving you a few scenarios. पहला सिनारियो है, आपने क्रिप्टो में इन्वेस्ट किया और आपका क्रिप्टो खो गया, योर क्रिप्टो वाज स्टोलन और लॉस्ट एंड इट वाज नेवर रिकवर्ड. So in this case, you invested and it got lost. So you have not redeemed anything, you have not sold or swapped or transferred anything. In this case, आपका टैक्सेबल इवेंट अराइज नहीं होगा. देयर विल नॉट बी एनी टैक्सेबल इवेंट. बट एट द सेम टाइम जो आपका लॉस हुआ है, लेट अस से यू इन्वेस्टेड रुपीज 50,000 एंड दिस गॉट स्टोलन, you cannot claim it as a loss. There is currently no provision which will let you claim this 50,000 rupees as loss. This is again a sunk cost. All right, ये आपका loss हो गया है. All you can do sadly at this point is just, forget about this loss and move on. अब सेकेंड, Hmm. आपका क्रिप्टो है, योर क्रिप्टो इज स्टोलन आफ्टर यू हैव एग्जीक्यूटेड अ सेल ट्रांजैक्शन. आपने सेल कर दिया है, इसके बाद आपका क्रिप्टो इज लॉस्ट. इन दिस केस सेल इज ऑलरेडी टैक्स. द मोमेंट यू सेल अ टैक्सेबल इवेंट अराइजेस. तो आपका जो भी गेन है, उस गेन पे तो अगेन आपको टैक्स भरना ही पड़ेगा. बट जो आपका क्रिप्टो का वैल्यू, द वैल्यू ऑफ द स्टोलन क्रिप्टो, again you cannot treat it as a tax loss. This is only your personal financial loss, and again this is not tax deductible. If you have made gains from those crypto gains, you cannot set off or adjust this loss of crypto. So sadly, once again here you will just have to swallow the bitter pill कि आपका loss हो गया है and you will have to move on. अब मान लीजिए a slightly different scenario, you had lost these cryptos but you recover these cryptos at a later point in time. जब Hmm. आप रिकवर करते हो वो आपकी असेट बन जाती है फिर से. नाउ डिपेंडिंग ऑन जब आप इसको सेल कर रहे हो इन फ्यूचर, डिपेंडिंग अपॉन द सेल वैल्यू, अगेन आपका टैक्स इवेंट अराइज होता है. इफ देर इज अ गेन, यू एंड अप पेइंग 30% टैक्स. Absolutely, absolutely. Mega, one very important question, like from my side also. Let's just say I'm a crypto investor. ऐसे कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए जिसके साथ I should be ready with when it comes to crypto tax filing? All right. So crypto tax filing, first of all, again, I will also, bring in our discussion points that we did earlier.
फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट अगर आप बहुत बेसिक लेवल पे क्रिप्टो कर रहे हो, you're just doing clean spot trades, nothing else, so it would be advisable you go ahead and get a tax P&L statement, a transaction history summary from your crypto platform for a financial year. देन आपको टीडीएस सर्टिफिकेट चाहिए, या फिर यू कैन गो हेड एंड चेक आपका 26 एएस इज फुल्ली अपडेटेड और नॉट. देन आपको वॉलेट रिकॉर्ड्स चाहिए होंगे. ऑल राइट. Then if you are entering into slightly complicated transactions, as we saw coin wallets or p2p, in this case it is very important that you have detailed transaction list. Again, मैंने जैसे बोला था earlier, एक मल्टी लेवल जो टैक्स होता है, रीबैलेंसिंग पे जो टैक्स होता है, so in this case it is very important you keep track of all trades, and you have a detailed record of each and every transaction, each and every swap or rebalancing happening. Because इसमें क्या होता है, many a times we have seen people then at a later point in time they struggle with cost of acquisition. अब हमारे पास सारा सारा कुछ डेटा है, बट वी आर मिसिंग विद कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, या बाई वैल्यू नहीं मिल रही है. So in this case, that is why we say users, please track your crypto investments or your crypto dealings at regular intervals. Do not make it a year-end exercise that you take once in a year at the time of filing ITR. ये ऐसा नहीं है. इसको आप मान के रखिए क्वार्टरली एक्टिविटी, या have a timetable in place. Go ahead and check all your records, data. Keep maintaining a robust documentation ताकि year end पे एक seamless आपका filing हो जाए. ओके ओके. मेगा फाइलिंग की हम बात करें तो गिरीश ने एक फिर से सवाल पूछा है जिससे हमने डिस्कशन किया था. अंडर विच आईटीआर ऑप्शन वी शुड फाइल फॉर क्रिप्टो प्रॉफिट्स? ITR 2. आपको ITR 2 फाइल करना है अगर आपके क्रिप्टो प्रॉफिट्स है तो. Okay, okay. Next question, Megha, coming from a future trader. I would say it's a very interesting question also and funny at the same point of time. He's asking if I had a loss of 16,000 in future and leave and decide to leave future trading forever without informing in my ITR. Is it okay? All right. So again, here, Apurva, before Hmm. I answer this question, I would like to, tell a very popular saying: Yes. "Death and taxes cannot be escaped." All right. तो आपका टैक्स लग रहा है नहीं लग रहा है आपको बताना है. You have to always be on the compliant side, because Hmm. again, let me just uh, tell the basics so that we are able to appreciate it more. अब आप जब भी कमाने जाते हो, whenever you say that you want to go ahead and invest somewhere and earn, the objective is always to earn. Like the Yes. objective is always to make profit. Nobody says अगर loss आया है तो ये करना है नहीं करना है, because we don't do anything with an intention of loss. Loss is a subset of profit. ऑलराइट, हम लोग प्रॉफिटेबिलिटी के लिए कर रहे हैं, तो इफ यू आर रिपोर्टिंग प्रॉफिट्स, इट इज इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर यू टू रिपोर्ट लॉसेस एज वेल. All right, you cannot do away with this. And secondly, another point of caution here, or another thing that I would like to highlight, given this dichotomy currently in taxes, in the taxation mechanism for crypto futures, all right, I would still advise the users, strongly advise the users, to go ahead and report this future. Because if you are taking a वेरी अग्रेसिव पोजिशन कि ये फ्यूचर्स को तो मैं बिजनेस ही ट्रीट करूंगा या मैं बिजनेस ही ट्रीट करूंगी, in that case please note that if it is treated as a regular business, you can file ITR 3, and ये जो आपका loss है you can carry it forward, because this is Okay. categorized as business loss. And because this is a gray area, it is, you can go ahead and take that risk if you want to, but make sure whatever is the position that you take, it is backed by solid professional advice from a professional. Please do not take do not have hearsay, don't listen to hearsay advice or something you've read off a blog. Always Hmm. consult a tax professional, consult a certified qualified professional for personalized advice on these matters. Absolutely, absolutely, Megha. Keeping a note of the time, I'll skim through more questions that we have on a way quickly, Megha. Next question is TDS also applicable in case of airdrops? All right. Typically, TDS is not deducted if you're just receiving free crypto, but fair market value जो होती है आपके on the day of the airdrop, that is considered as your income and taxable as other income. Okay, okay.
मेरा एक क्वेश्चन आई थिंक इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एज वेल, जो हमने भी बहुत बार सुना है यूजर से. वन पर्सन हैज आस्क्ड, मैंने किसी भी ऐप पे, क्रिप्टो ऐप पे डिपॉजिट किया अपने कुछ मनी, पर मैंने वहां पर ट्रेड और इन्वेस्ट कुछ भी नहीं करा है, एंड विदाउट टेकिंग एनी एक्शन मैंने अगर विड्रॉ करा वो अमाउंट, तो क्या 1% फी लगेगी उस पे, और अगर नहीं लगेगा तो एग्जैक्टली चार्जेस होते क्या है अगर मैंने ट्रेड और इन्वेस्ट किया ही नहीं प्लेटफॉर्म पे? ऑलराइट, सो इधर जस्ट टू क्लैरिफाई दिस क्वेश्चन, ये आप बोल रहे हैं आपने सिर्फ एक डिपॉजिट किया है एंड विदाउट अंडरटेकिंग एनी ट्रेड विड्रॉ कर लिया है, जी जी, राइट? एग्जैक्टली. ऑलराइट, तो अब इस पे ना अगेन दिस इज स्लाइटली ट्रिकी बिकॉज व्हाट वी हैव सीन इन सर्टेन केसेस दैट 1% TDS is not charged, ऑलराइट, बिकॉज 1% TDS is only if you have traded. अगर आपने ट्रेड किया तो होता है, अगर आपने ट्रेड नहीं किया तो नहीं होता है. बट वी हैव सीन सर्टन केसेस वेयर इरिस्पेक्टिव ऑफ आपने जो किया है, अगर आपका पैसा वॉलेट में गया है तो 1% TDS हो गया है. So this again you will have to see platform to platform. However, what the user needs to keep in mind is जब आप कोई भी deposit कर रहे हो and then you are withdrawing, आप you may have certain additional charges like you know a withdrawal fee or a platform fee which you may have to pay. Okay, okay, Megha. Next up, we have another question, which is, if I transfer the crypto to my wife as a will, then what to do? Will it be taxable? All right. So again, now this I think is a combination of two questions that we you know we've discussed earlier: gift, relatives, and also a will. So very nice. Let me you know break it down into several parts. One is if you're gifting during your lifetime. All right, if you're gifting this crypto during your lifetime to your wife, will your wife pay any tax on transfer? Absolutely not. As we have already established, if you're getting something as part of a will or an inheritance, at the time of receipt, the receiver does not have to pay any taxes. Hmm. But will there be any tax on future sale by the wife? Absolutely yes. If in the future the wife decides to sell these cryptos and ये crypto से अगर उनको gains हो रहे हैं, then Hmm. whatever is the profitability, उस profit पे taxes will be applicable, flat rate of 30%. Will Okay. और inheritance से भी मिल रहे हैं, the funda, the logic is the same. At the time of transfer, जब हो रहा Hmm. है no taxes, जब आप sell कर रहे हो future में तब 30% tax लगेगा. Then, typically, spousal transfers are always exempt from gift tax. Agar between spouses, whatever gift you give, irrespective of the value, is Hmm. always tax free. However, whenever you go ahead and decide to sell it at a later point in time in future, उस टाइम पे टैक्स लगता है. एंड वन मोर थिंग द यूजर नीड टू रिमेंबर इज डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, अगेन दिस हैज टू बी अ केस बाय केस स्टडी, case by case Okay. evaluation. You may also be subject, in this case the husband may also be subject to clubbing provisions. So एक इनकम टैक्स लॉज में एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन, एक बड़ा ही इंटरेस्ट कॉन्सेप्ट है, क्लबिंग ऑफ Hmm. इनकम. सो बहुत Hmm. बार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या करती है, although the income is of your spouse, they club it under your income under specific scenarios. So this is something the user may have to bear in mind, that they do not attract clubbing provisions. Okay, okay. Mika, I think very well explained. We have sort of discussed different scenarios when it comes to, crypto as a will. I hope users are also understanding it pretty well. Next question is about the cold wallets. What about the cold wallets? Does one need to disclose the income there as well? All right. Yes, अगर आपकी इनकम है, again you cannot escape non disclosure of any income, especially if you're an Indian tax resident. आपकी Hmm. ग्लोबल इनकम आपके ITR में आनी चाहिए. This is a very strict provisions. And again, currently the tax activism is so much, or the strictness or the compliance by the income tax department is so much, that wherever in the world you're earning income, the income tax department is getting it to know, and their use of AI, data analytics, robotics has increased so much that you cannot practically escape non-disclosure of income of any kind. So absolutely yes, you need to go ahead and disclose your income. Now, if Absolutely. you're only holding the crypto in your wallet, you have not sold it, in that case, it is not mandatory. Most of the cases, it is not mandatory. However, if your income exceeds
If your taxable income exceeds more than rupees 1 crore, you may be Hmm. required to disclose the crypto holding. Okay. Second scenario, from these cold wallets, if you have sold, then absolutely yes, disclosure तो बनता है, एंड इस डिस्क्लोजर के साथ आपको अपने गेन्स पे भी टैक्स देना पड़ेगा. Hmm. Absolutely, absolutely. Megha, moving on to the next question. We have just 5 minutes left, guys. We are taking it one by one. बहुत सारे questions हैं, हम वो सारे questions pick up कर रहे हैं जो काफी important है हमारे users के लिए. Um, in a foreign exchange, which is FIU affiliated, FIU compliant, if I keep my assets in stable coins like USDT, not converting to INR, will it be taxable? All right. So again, if you're just holding crypto, whether you're holding it in INR or any other currency, or you're holding it on an Indian exchange or Indian backed wallet or a foreign, exchange wallet, you do not have to go ahead and pay any taxes on it. Holding पे taxes नहीं होते हैं. Profit Mhm. पे at the time of sale जब आप करते हो तब taxes होते हैं. However, अगर in this case, if you're holding your crypto in a foreign exchange, then as an Indian tax resident, you will have certain compliances. This becomes your foreign asset, and the moment you have a foreign asset, as an Indian tax resident, you have to mandatorily disclose this in your Schedule FA, that is Schedule Foreign Assets of your ITR. And again, the ITR that you will file in this case will be ITR 2. Okay, okay. Clear, clear. Next question, Megha. It is coming from a Mudzex user. He is asking, how can we convert USDT to INR value? Because Mudzex statements are usually in USDT. All right. So you're saying how can we convert USDT into INR value? First of all, Yes. you need to go ahead and find your transaction date. आपके Hmm. मुद्रेक स्टेटमेंट में आप अपनी ट्रांजैक्शन डेट लीजिए. Then you please go ahead and get the conversion rate, the USDT to INR conversion rate. All right. And this should be typically available on the Mudrex platform itself. All right. Yes. Then you have to convert this using a formula. So जब भी आपको INR वैल्यू में कन्वर्ट करना होता है, USDT amounts into the applicable rate, and then Hmm. lastly you can use this INR value and compute your capital gain or loss. Absolutely. So Megha, conversion is taken the day we are actually doing the process, right? Conversion rate उसी दिन का हम लेंगे. Yes. Yes. Okay. Last but question coming on. Yes, it's already 8:27, guys. One question is from a user who's asking, Binance, what are the let me just sort of go through it over again. What are the tax compliances regulation when it comes to Binance? I would say All very much right. simple, but yeah, over to All Megha. right. So again, I'm presuming the question that the user has asked, Hmm. Binance is another platform, another crypto Yes. platform. If the user can clarify that, that would be really helpful, because again, crypto taxation is not platform specific. Crypto Hmm. taxation is specific on the crypto. So whatever is the taxation that we've discussed so far, the 30% rate, 1% TDS, then the current dichotomy or the sort of gray area between spot and futures will all apply mutatis mutandis, irrespective of the exchange that you are affiliated with. Yes. I think the question specifically, what if we transfer funds from one exchange to Binance, or let's just say we are withdrawing funds from Binance? These could be the probable questions we are assuming. If you're doing a self transfer between exchanges, typically it is not taxable. Absolutely. And also, if you are withdrawing from Binance after profits, you have made profits, the process will be similar, which we have already Yeah, see, if discussed. you have made profits, अगर आपकी profits हो गई हैं तो always flat 30% tax तो आपको pay करना ही है उस पे. Then you're withdrawing or not, that is inconsequential. The moment you have realized gain or the moment you have sold it, it becomes your realized gain, and on that you will have to go ahead and pay tax at a flat rate of 30%. Absolutely, absolutely. I think Megha, we have streamlined many questions one by one. After and after all, again, I'm going through the comment section yet. Guys, hopefully we have answered all your queries. Megha, this was very informative. But last tips that you want to give to our users who are, investing and trading into crypto when it comes to taxation. What are your tips?
Absolutely, yes. Apurva, thank you for that. One is again an earnest request, from a tax professional this side to all crypto traders. Please do not, consider not disclosing. If you have crypto, please go ahead and disclose it. All right. The sheer number, the sheer volume of notices that we are seeing from the IT department for non-disclosure, please avoid that. Let us not get into the trap of getting defective notices or demand notices. आप डिक्लेयर कर दीजिए इन गेट गो. ऑल राइट, Yeah. ठीक से उसको डिक्लेयर कर दीजिए. अवॉइड ऑल अननेसरी नोटिसेस. द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, please maintain documentation, because this is somewhere we see, this is an area of lacuna. All right, there's a big lacuna here that we struggle with documentation a lot of times, and it is not, one person's fault here, or there is nobody we can pinpoint on. Sometimes, it is so confusing कि ये document मैं कहाँ से लाऊं, and how do I tax this, because again we have so many different variations of crypto trade these days. It is not restricted to your traditional buy and sell. We have P2P, we have baskets, we have foreign D apps, DeFi platforms, and everywhere. Although the bottom line is आपको 30% pay करना है, but there are layers to it. So this, sort of can get confusing. और अगर आपके पास robust and strong documentation नहीं है, then even the tax experts' hands are sometimes tied. They will not be able to help you to the best of their abilities and capabilities. So again, do not keep it as a year-end exercise every quarter, or if you're a regular crypto trader, maybe on a month-on-month basis, go ahead, take stock of all your documents, ensure कीजिए कि आपके पास सारे transaction details है, सारे relevant documents है, so that जब आप file कर रहे हो taxes, आपके पास सब कुछ very clearly है. Absolutely. When the penalties are so severe, guys, please abide by it. Please do file your Also, crypto tax. Apurva, I'm so sorry to break you, but another thing that I wanted to inform a lot of our users, again, this is ये जो बोलते हैं issued in public interest है. So tomorrow is 31st July. Tomorrow is not the last day to file your returns, but it is the last day to pay your taxes if you want to avoid additional penalty and interest under section 234 BC. So अगर आपकी heavy tax payable है, tax due है for the current year, दैट इज Hmm. फाइनेंशियल ईयर 2024-25, तो प्लीज पे कर दीजिए आपके टैक्सेस. आप अपनी आईटीआर फाइलिंग 31 जुलाई के बाद भी कर सकते हो, बट जो टैक्स ड्यू है आप 31 जुलाई तक पे कर दो, ताकि आपको अगस्त का इंटरेस्ट ना लगे. अगर आपने टैक्स 1 अगस्त का भी पे किया है, तो पूरे अगस्त मंथ का आपका इंटरेस्ट लेवी हो जाएगा. अवॉइड दैट. इफ यू हैव अ टैक्स लाइबिलिटी, आप कल उसको पे कर दीजिए, कल तक. Absolutely, Megha. Thank you so much for the reminder. Before we sort of exit, we have one last question. It's a request, Megha. We'd like to take that. Last question is from one of our users who's asking how to report TDS on arbitrage trading between a decentralized exchange and a centralized exchange. Megha, you are on mute, actually. Megha, I think you are on mute. Yeah, I can hear you now. Okay. Megha, I can't hear you. Sushant, can you confirm? We can't hear you, Megha. I think you are on mute. Cool. I think no worries. Uh, there is no voice. We can't hear you. It's okay, Megha. I understand there could be some technical glitches. What we'll do is we'll keep a note of this question, but we'll make sure that we answer this one. I will be forwarding your question to Megha and she'll be more than happy to answer this one. Megha, you can drop something in the private chat, but tell them. Yes, yes. That's what I'm saying. We'll answer this question on the Telegram. We have duly noted your question. I hope, Megha, you can hear me. We can't hear you. But it was a lovely session with you. Thank you for answering all the questions. Yeah, please. I am able to hear you, Apurva. Are you able to hear me? Yeah, now I can hear you.
All right. Okay, Apurva, could you please repeat the question just a minute? I was not able to hear the question at Okay. my end. Just last question, then we of course Yes. wind up. I think it's already, the time is up. But let's take with this one. How to report TDS on arbitrage trading between decentralized exchange and a centralized exchange? All right. So here again, couple of things to keep in mind. If you're buying from an Indian tax resident, in Hmm. that case, one, you will have to, deduct TDS. Taxes will not have to be paid. There will not be any tax liability. If you're filing from a foreign decentralized exchange, TDS is also not required. Tax is also not required at the time of buying. Only at the time of transfer or sell. Again, standard VDA rules 30%. If you're selling crypto anywhere, whether a decentralized or a centralized exchange, TDS requirement will never be on you. However, whenever there is a profit on such sale, on such profit, you will end up paying a 30% tax. I Okay. hope that clarifies. And I hope you were able to hear me. Yes, yes, Megha, you're completely audible. Guys, thank you so much for all your questions. Megha, again, thank you so much for being here, answering all our queries. It's great to have you again this year. Hopefully, we are meeting next year too and discussing the same things with more regulated sphere when it comes to crypto taxation and with a lot of clarity. We all want it. Sure, Absolutely. absolutely. And guys, any questions that are left, you can join our Telegram community, official projects. We'll be more than happy to answer your queries. I'll be coordinating with Megha. Thank you so much, guys. Thank you, Megha. Lovely session. Thank you, everyone. Thank you so much, Apurva. Good night, everyone. Thank you. Thank you.